हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा, जो 11th एनसीईआरटी का एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स दैट सर वर्नलाइजेशन क्या होता है। तो आइए बेटा, मैं आपको आज वर्नलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वर्नलाइजेशन का मतलब होता है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा। इंडक्शन मीन्स इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना। सो यू कैन राइट हियर एज स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग. So this will explain to you the little better condition. Stimulation of flowering by cold treatment. If you treat a plant with cold condition, flowering will be stimulated. So वर्नलाइजेशन को समझाने के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं ज़रा समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि देयर आर 4 सीजन्स। उसमें हम स्प्रिंग की बात करते हैं, समर की बात करते हैं, ऑटम और विंटर की बात करते हैं। सो माई पॉइंट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैराइटीज. सम वैराइटीज आर स्प्रिंग वैराइटीज एंड अदर वैराइटीज आर विंटर वैराइटीज. In normal countries like India and other tropical countries, spring varieties are sown in spring and harvested in the end of the spring season. Like this is the condition. For the same color, ये जो spring variety है वो मैंने यहाँ पर भी spring variety mention कर रखा है बेटा। जो winter varieties होती हैं वो winter के शुरुआत में ही बोई जाती हैं और winter के end में काट ली जाती है। बट द थिंग इज कि अगर हम ऐसी कंडीशंस की बात करें, ऐसी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि कंट्रीज़ लाइक रसिया एंड अदर प्लेसेस जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के लिए ये प्रोसेस है बेटा वर्नलाइजेशन। और वहाँ क्या होता है, इनका कहना है कि अगर हम किसी क्रॉप को ऑटम सीज़न में बो दें, ऑटम सीज़न में अगर बो दें तो हम ये कहते हैं कि ऑटम सीजन में यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किया कि यहाँ पर वो क्रॉप बोई गई, सोन। आफ्टर देन द क्रॉप गेट सीडलिंग इन बिगिनिंग पार्ट ऑफ द विंटर, बट ड्यू टू स्नोफॉल those seedlings were just covered by the snowfall condition, and after some time when the snow melt during the spring season, the vegetative growth resume. And this vegetative growth is actually continued after the spring season completed and summer continues, and in due course of time at the mid of the summer the crop get harvested. This whole sequence is called as springification, right? So this is the point for you. When you see this as the sequence, this whole is called as springification. In the box, what you saw is called as springification. Springification is another name of vernalization. What I meant to say is, if you talk in this way, that is called as springification. And this springification is actually another name of vernalization. Vernalization. There are 2 functions performed by cold treatment. If you provide cold treatment on a condition, this cold treatment can have 2 conditions or effects. 2 conditions or effects. One is called as shortening of vegetative period. In first case, यही जो कोल्ड ट्रीटमेंट है ये वेजिटेटिव पीरियड की शॉर्टनिंग करता है बेटा, मीन्स अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। अर्ली फ्लावरिंग इंडक्शन, ये कहीं ना कहीं अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, जबकि कुछ केसेस में इट प्रिवेंट, हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इट प्रिवेंट अर्ली फ्लावरिंग। ये कहीं ना कहीं अर्ली फ्लावरिंग को प्रिवेंट करता है। In NCERT there is a statement, precocious reproductive development
इसी बात को मैं आपको समझाता हूँ। प्रिवेंट, इसी को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मेंशन कर लेते हैं बेटा, प्रिवेंट प्रिकोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। अंडरस्टूड माय पॉइंट? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मीन्स फ्लावरिंग और प्रिकोशियस मीन्स अर्ली। सो अर्ली प्रिकोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को ये प्रिवेंट करता है, यानी डिलेड फ्लावरिंग की बात करता है। व्हेन यू से दिस इज exemplified in the case of wheat, barley, while this type of conditions can be exemplified in case of carrot, turnip, cabbage, etc. So when you see this, even in sugar beet, NCERT example is sugar beet as well, where you can see that the shortening of vegetative period can be seen in some cases, elongation of the period can be seen in some cases by the same effect, that is called as cold treatment. When you define it clearly, you can call it as shortening biennial converted into annual. By this process, biennials can convert it into annuals, but here the harvesting can be easy, means the crop which was not can be harvested due to snowfall, but you can see that if we sown that crop in autumn season in countries where snowfall takes place, the crop can be harvested easily. For harvesting one crop in a year, एक साल में एक क्रॉप को ग्रो कराना हम यहाँ पर देख पाएंगे, राइट बेटा? दैट इज ऑल फॉर दिस।